Hello, I am going to start the new chapter trigonometric or circular function. Trigonometric or circular function. Let x dash o x and by dash be the coordinate axis. These two line. Obviously these are line. So the first line is x dash o x. This is a axis. This is a coordinate axis, and the another axis is by o y dash. So let x dash o x and by o y dash be the coordinate axis, taking o as the center, and center is as obviously o, and a unit radius. Taking o as the center is o को center मान के, and a unit radius, draw a circle cutting the coordinate axis at a dash b dash as shown in the finger. तो ये कह रहा है कि x डैश x एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बाई ओ बाई डैश एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक x डैश ओ x है और एक बाई ओ बाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं जिनका सेंटर ऑफ पॉइंट जो है वो है। तो भी सेंटर ऑफ पॉइंट ओ से हमें एक यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। यूनिट रेडियस मतलब कि जिसकी वैल्यू जो है 1 है, लेकिन उसकी यूनिट नहीं दी हुई है। मेरे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इट्स नथिंग इज सेइंग अबाउट हेयर। सो इट्स जस्ट सेड कि 1 यूनिट की 1 अमाउंट की सर्किल ड्रॉ करनी है। सपोज दैट है, और जब ये सर्किल ड्रॉ करेगा और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करेगा, एक तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट करेगा कहाँ पे, ए पे कट करेगा, एक्स पे, ओ वाई पे बी पे कट करेगा, ओ एक्स डैश पे ए डैश पे कट करेगा, एंड ओ वाई डैश पे बी डैश पे कट करेगा। सपोज दैट ए मूविंग पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स along the circumference of the circle in an anti-clockwise direction. Let it cover an arc length theta and take the final position p x by join OP. ओके, तो कह रहा है कि कोई मूविंग पार्टिकल है, कोई मूविंग पॉइंट है जो कि इस पर मतलब मूव करना स्टार्ट करेगा। कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट ए से, लेकिन मूव्स करेगा कि इसमें ये जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस पे मूव करेगा सर्किल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि जो हम एंगल बना रहे हैं वो पॉजिटिव बना रहे हैं। लेट इट कवर एन आर्क लेंथ, और ये जो आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ कवर किया, ये आर्क लेंथ की एंगल थीटा दिया है। ये आर्क लेंथ की क्या दिया है? थीटा दिया है। एंड टेक द फाइनल पोजीशन, और इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है? पी हो जाती है, जो कि मान लेते हैं कि एक्स और वाई है। कोऑर्डिनेट पे एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू एक्स है एंड वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू वाई है। एज वी नो थीटा इक्वल टू एल बाई आर। एल इक्वल टू थीटा इंटू आर हो रहा है ना। हाँ, एज वी नो थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाई आर। यहाँ पे थीटा रेडियन क्या दिया है हमें नहीं पता है, एल की भी वैल्यू नहीं पता है। एल की वैल्यू पता है बट इसे डिराइव करना है। तो एल की वैल्यू, आर की वैल्यू पता है 1, तो सो ऑब्वियसली 1 इधर जाएगी, तो 1 इंटू थीटा रेडियन इक्वल टू एल हो जाएगा। तो एल इज ऑब्वियसली इक्वल टू थीटा रेडियन। सो द जो मेंशन किया है वो सही किया है। नो एंगल ए ओ पी, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाई आर है। तो थीटा रेडियन, एल कितना है? थीटा अपॉन 1 है, तो थीटा रेडियन इक्वल टू थीटा आ जाएगा। तो एंगल ए ओ पी इक्वल टू थीटा आ गई। या एंगल ए ओ पी को लिख सकते हैं आर्क ए पी अपॉन रेडियस ओ पी। तो आर्क ए पी थीटा है और रेडियस ओ पी 1 है, तो थीटा अपॉन 1 इक्वल टू थीटा रेडियन, यूजिंग द फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल बाई आर। Now the sixth circular function may be defined as under. अब कह रहा है कि 6 सर्कुलर फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे जो सर्कुलर फंक्शंस की बात हो रही है, सर्कुलर फंक्शंस,
एक तो cos थीटा हो गया, cos थीटा इक्वल टू b अपॉन एच, एज वी नो b अपॉन एच, x अपॉन बाई, x अपॉन 1, so x. sec theta is opposite of cos theta, so just 1 upon x. tan theta equal to p upon b, so by upon x, when x not equal to 0. Why is it writing x not equal to 0? Because x is in the denominator part, so x can't be 0. Now look here, sin theta equal to y as p upon h. Cosec theta is again opposite of sin theta, so 1 upon y, and y not equal to be 0 because y is in denominator. Cot theta is equal to opposite of tan theta, so tan theta is saying y upon x, then obviously cot theta will be say x upon y, and because y is in denominator, so y not equal to be 0. Here we didn't write x not equal to 0 because x is in numerator part and y is in the denominator part. Now to clearly we have sec theta equal to 1 upon cos theta, cosec theta equal to 1 upon sin theta, tan theta equal to sin theta upon cos theta, and cot theta equal to cos theta upon sin theta. Here cot theta equal to 1 upon tan theta equal to cos theta upon sin theta. Now we are going to learn about the first theorem, theorem 1. For any acute angle say theta, यहाँ पे और एडिशनल फार्मूला थ्योरम्स या फार्मूले दिए हुए हैं. कह रहे फॉर एनी एक्यूरेट एंगल थीटा, किसी भी एक्यूरेट एंगल थीटा, एक्यूरेट एंगल्स मीन्स द वैल्यू ऑफ एंगल इज बिलो 90 डिग्री. सो फॉर एनी एक्यूरेट एंगल थीटा वी हैव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 plus tan square theta equal to sec square theta, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. We have to learn all these formulas. Sin square theta plus cos square theta equal to 1 is easy, and the next one is 1 plus tan square theta equal to sec square theta. tan के साथ sec आ रही है cos के अपोजिट, और cot के साथ sin के अपोजिट cosec आ रही है. So 1 plus tan square theta equal to sec square theta. Yeah, we can also write like this: tan square theta sec square theta minus tan square theta equal to 1, cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So 1 plus tan square theta equal to sec square theta, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Did I learn is sin square theta plus cos square theta equal to 1, sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus tan square theta equal to sec square theta, 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Okay, I got it. Now we have to also prove this. Okay, let x dash ox and y o y dash be the coordinate axis as we talked here. Obviously as the previous we are taking O as the center and the unit radius. Draw a circle meeting OX at A. Let PX by be a point on the circle with angle AOP equal to theta. Now join OP. Draw PM perpendicular to OA. अब इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खिलानी है किस पे, OX एक्सिस पे. So the point which will be lie on the OX from coming from the point P, it will be named as M. So PM perpendicular upon OA. We can it's take OX से पे OA ले रहे इस रेडियस को, तो PM perpendicular OA. Then cos theta equal to x, बिकॉज cos थीटा वैल्यू इज b अपॉन एच. यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिखा है कि b अपॉन एच, p अपॉन एच, p अपॉन b होता है. वो we have already learned about in our previous classes. So this book didn't mention, but obviously if it mention it will be good right away. So cos theta equal to x, sin theta equal to y. From right triangle OMP. Now look, this triangle is a right angle triangle OMP. The right angle is making at the M vertex.
we have obviously OM square plus PM square equal to OP square. So x square plus y square equal to 1. OM equal to x, PM equal to y, and OP equal to 1. So cos square theta plus sin square theta equal to 1. x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा. ऑब्वियसली मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल पे उसके वैल्यू को पुट करके वो वैल्यू को ड्राइव किया, तो ऑब्वियसली बी गेटेड कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ y में कॉस स्क्वायर थीटा. अब एक साइड में हमें क्या कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है. क्यों? क्योंकि इसे हम लोग tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है. अगर कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना रहता तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं. तो जब हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा विल बी कन्वर्ट इनटू 1. दिस विल बी कन्वर्ट इनटू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस विल बी कन्वर्ट अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. So 1 plus tan square theta equal to, and 1 upon cos square theta will be again sec square theta. So 1 plus tan square theta equal to sec square theta. This theorem of formula is also proved. Now dividing both side of the first equation by sin square theta. So cos square plus sin square theta will be give cot square theta. Sin square theta upon sin square theta will be equal to 1, and 1 upon sin square theta will be equal to cosec square theta. So again cot square theta plus 1 equal to cosec square theta. Here we can also write it like this: 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. अब यहाँ पे नेगेटिव आर्क लेंथ के बारे में कर रहा है. एज वी ऑलरेडी नो, इफ द particle moves in a anti-clockwise direction, then it will be called that it is making positive angle, and when it is moving in a clockwise direction, then it is called that it is moving in negative direction. So if a point was in a circle, if a point moves in a circle, देन द आर्क लेंथ कवर्ड बाई इट इज सेड टू बी पॉजिटिव या नेगेटिव. तो जो आर्क लेंथ कवर्ड होगा वो उसे पॉजिटिव या नेगेटिव बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर द पॉइंट्स मूव्स इन द एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉजिटिव, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो नेगेटिव. नो फॉर एनी एक्यूरेट एंगल से थीटा बी हैव. अच्छा यहाँ पे भी और फॉर्मूला दिए कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है. ओके, मतलब कॉस का माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू कॉस थीटा हो जाती है. इसको भी प्रूव करेगा क्या आगे जाके, आई डोंट नो. हाँ, प्रूव तो करेगा ही. ओके, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. कॉस के साथ थीटा लगाओ या माइनस थीटा लगाओ, उसकी वैल्यू सेम कॉस थीटा ही रहेगी. साइन के साथ माइनस थीटा लगाने पे वो माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाती है. कॉस कन्वर्ट नहीं हो रही है, साइन कन्वर्ट हो रही है. फिर देन टैन जो होती है वो भी कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक टर्म जो है वो कन्वर्ट हो रही है और एक टर्म कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा माइनस टैन थीटा. कॉट माइनस थीटा भी ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि टैन कन्वर्ट हो रहा है. सेक माइनस थीटा विल भी कन्वर्ट हो जाएगा. नहीं, सेक माइनस थीटा कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो उसके अपोजिट भी कन्वर्ट नहीं होगी. और कॉसेक माइनस थीटा विल भी आल्सो कन्वर्ट टू कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा. यानी कि सिर्फ कॉस बदल रही है और साइन नहीं बदल रहा है, कॉस बदल रहा है. कॉस बदलेगा तो भी टैन बदलेगा, टैन बदलेगा तो कॉट बदलेगा, कॉस बदलेगा तो सेक बदलेगा. साइन नहीं बदल रहा तो कॉसेक नहीं बदल रहा. Okay, now we are going to look how it can be proved. Let x dash ox and by o by dash be the coordinate axis with o as the center, and draw a circle of unit radius meeting ox at a, where the coordinate value of a point is 1, 0. Okay, let p x by be a point on the circle such that the angle AOP इक्वल टू थीटा. ओके, और सेम यहाँ पे एक और पॉइंट लेना है, क्यू लेना है. कि अब हमें क्या करना है, ए और क्यू भी बनाना है जो कि इक्वल अमाउंट, जो कि इक्वल यूनिट है, मतलब जो एंगल की यूनिट सेम रहेगी, थीटा ही रहेगी, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही तो माइनस थीटा हो रही है. देन द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड क्यू
देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, तब जो क्यू का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स तो पॉजिटिव नहीं है, बस वाई नेगेटिव हो गया, तो एक्स कॉमा माइनस वाई. नाउ कॉस थीटा विल बी, वेयर इज द थीटा, थीटा इज द हेयर, वेयर इज द राइट एंगल इज हेयर, तो कॉस थीटा इक्वल टू वी अपॉन एच. कॉस थीटा विल भी क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन, अच्छा इसमें तो वैल्यू सेम ही रहा क्योंकि एक्स तो पॉजिटिव ही है, तो एक्स अपॉन 1. सो कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. अब साइन माइनस थीटा को देखें तो साइन थीटा क्या हो जाता है, तो पी हो जाता है. हाँ, तो साइन थीटा पी का चूँकि वैल्यू क्या है, माइनस वाई है, तो इसलिए साइन थीटा चेंज हो रही है. टैन थीटा में ऑब्वियसली साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन तो पॉजिटिव में है लेकिन कॉस हमारा नेगेटिव में है, तो प्लस अपॉन माइनस विल बी माइनस. या वी कैन ऑल्सो से माइनस अपॉन प्लस इक्वल टू माइनस. साइन चेंज होता है, कॉस चेंज नहीं होता. साइन चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि पी ले रहा है, यानी कि बाई वाला, तो साइन चेंज होता है, कॉस चेंज नहीं होती है. यानी कि सिर्फ कॉस और सेक ही चेंज नहीं होता, बाकी सब चेंज हो रहे हैं. ओके, तो टैन थीटा तो वो दोनों को फंक्शन की कर दिया. वर्किंग इन दिस ऑर्डर यू कैन प्रूव द रिमेनिंग आइडेंटिटीज बाय योरसेल्फ. यस वी कैन. Now signs of trigonometric function in various quadrants. हम क्या किए, जो सर्कल्स है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एज ए क्वार्टर. सो दिस वन इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट. ऑल टी फंक्शन सब पॉजिटिव. कह रहे हैं कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होगी, जब एंगल 0 डिग्री टू 90 डिग्री, या सॉरी 0 क्या बोलते हैं उसको, 0 रेडियन टू पाई अपॉन 2 रेडियन होगी, तो सारी फंक्शंस पॉजिटिव होगी. इसका था ना ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मुझे याद आ गई, ऐड शुगर टू कॉफ़ी. अगर हम लोग 90 डिग्री से 180 डिग्री की बात करें तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है. और जबकि उसके अपोजिट में फोर्थ में क्या था कि कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे. और थर्ड वाले में क्या दे रहा है कि टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हो, बाकी सभी नेगेटिव होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव वाई नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन भाई साहब वो तो अलग अलग नेगेटिव है. सो एड शुगर टू कॉफी, यानी कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव है, सेकेंड में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव है, थर्ड में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, एंड फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है. सो यहाँ तक क्लियर हो गया. फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, थर्ड में टैन इज पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस इज पॉजिटिव. नोस वैल्यूज ऑफ टी फंक्शन ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल. कुछ पार्टिकुलर एंगल्स की ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू दी हुई है. वैल्यू ऑफ टी फंक्शंस ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल. साइन 0 डिग्री विल बी 0. अच्छा, इसको याद करना होगा ना, पहले इसको हम इस पर लिख देते हैं. ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री. या 5/6 के भी कंपेरिजन में कर सकते, बातें की लेकिन नीचे पड़ेगा. तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 270 डिग्री इक्वल टू -1. यस, 270 कहाँ आ रहा है, वो 270, 180 जस्ट नीचे आ रहा है ना, यानी कि वहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होती है और इधर लाइन पे, बॉटम लाइन पे कॉस पॉजिटिव होती है, तो ऑब्वियसली साइन तो नेगेटिव आएगा, तो -1 साइन 360 डिग्री इक्वल टू अगेन 0. सो साइन की याद हो गई, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2, सॉरी साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री हाफ,
साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, साइन 180 डिग्री इक्वल टू अगेन 0, साइन 270 डिग्री इक्वल टू -1, साइन 360 डिग्री इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2, कॉस 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हाफ, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1, cos 270 degree equal to 0 and cos 360 degree equal to 1. Now tan 0 degree equal to tan 0 degree equal to 0 आएगा क्योंकि sin 0 degree upon cos degree, तो 0/1 will be 0, तो obviously tan 0 degree equal to 0. yes. sin 30 degree हाफ हो रहा है, हाफ अपॉन क्या हो रहा है, हाफ अपॉन √3/2 हो रहा है, तो 2 कट गया 1/√3, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, और इसमें तो साइन 45 डिग्री में क्या था 1/√2, उसके 1/2, तो दोनों कट गया तो इक्वल, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, tan 60 डिग्री इक्वल टू वहाँ पे √3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे वहाँ पे √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, तो अगेन √3, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3, tan 90 डिग्री इक्वल टू tan 90 degree not defined because cos 90 degree will be 0 and it will come into denominator, so tan 90 degree equal to not defined. Tan 180 degree equal to again 0, tan 270 degree equal to tan 270 degree equal to again not defined, tan 360 degree equal to again 0, so tan 0 degree equal to 0, tan 30 degree equal to 1/√3, tan 45 degree equal to 1, tan 60 degree equal to √3, tan 90 degree equal to 0, no, tan 90 degree equal to not defined, tan 180 degree equal to 0, tan 270 degree equal to not defined, tan 360 degree equal to 0. now ये याद हो गया. Domain and range of trigonometric function. The domain and range of each one of the 6 trigonometric function is below. What does mean by R? R mean by real number. Okay. Sin x, the value of sin x will be R, and its value will be from -1 to 1. Cos x will be also R, its value will be again -1 to 1, tan x. tan x की जो वैल्यू होती है वो, इसकी वैल्यू जो होती है वो भी रियल नंबर में आती है. ये वाला थोड़ा टफ है, tan cot cos x इक्वल कह रहा है x बिलोंग करेगा रियल नंबर से यदि x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, जहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है 1 है, i है, जहाँ पे n क्या है इंटीजर है. जहाँ पे n क्या है इंटीजर है. एक सेकेंड, इंटीजर को तो जेड से शो करते हैं, तो आई से इरेशनल नंबर, जेड से तो इंटीजर को शो करते हैं, आई शायद इरेशनल नंबर हो गया.
रेशनल नंबर को क्यू से, आर से रियल नंबर, आई से, आई से होता है रेशनल नंबर। आई किसको बोलता है? इरेशनल नंबर को। दिस मीन बाई आई। जहाँ पे एक्स की वैल्यू 2n+1 नहीं हो और ये π/2 दिया है, n नॉट इक्वल टू 1। क्या लिखा है ये? रेंज। रेंज के लिए मुझे क्या फंक्शन चैप्टर पढ़नी होगी? फंक्शन के लिए रिलेशन पढ़ो, रिलेशन के लिए अगेन सेट पढ़ो। सेट पे क्या था? परम्यूटेशन एंड कम्बाइनेशन। आई विल स्किप, तो स्किप करके अगर फंक्शन देखूँ तो 78। यहाँ पे भी कुछ टर्म डोम करके आ रहा है, डोमेन। डोम देखना होगा तो फिर रिलेशनशिप करना चाहिए। 2 numbers A and B listed in a specific order and enclosed in parentheses form an order। कह कि 2 numbers A और B जिसको listed किया जाता है स्पेसिफिक ऑर्डर में और इनक्लोज किया जाता है पैरेंथेसिस एंड ब्रैकेट फॉर्म पे एक ऑर्डर पेयर। A is called as first member first component and B as second member या और second component।
अगर कंपोनेंट्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाएगा तब ऑर्डर पेयर जो है वो भी चेंज हो जाएगी। थस A, B नॉट इक्वल टू B, A। मम्मी you have to start solving the relation chapters. मुझे पहले वो चेक करना है कि वो डोम वाला इसी में कि नहीं। डोमेन रेंज एंड को डोमेन ऑफ ए रिलेशन इसी में पढ़नी है। Maybe I need to start again from the set chapter because I haven't completed the set chapter. I just leave it in the middle when I need the formulas from arithmetic progression and something like permutation and combination chapter. But I think set relations and function is the basic chapter before covering trigonometric or circular function. So I have to start here. So I have to resume from the topic where I left in the set chapter. So I think set chapter should be sufficient because everywhere here it will be also cover the set topics like here like subset, superset and many types of sets, inequalities and information. So I have to start again from set relation function and I will continue from this series. Even if I face any problems in the midwhile of the any chapter, I will take the help from the Google, but I will continue this chapter in this series. First I will complete set, then I will complete relations, and then I will complete function. After completing this chapter, then I will go to the trigonometric or circular function. Before completing the function chapter, I will not able to solve the trigonometric or circular function. So I have to complete this chapter in this series. Okay. Now as I already learned about the set chapters, so I will just look about the 5 pages.
something like example 4. Okay, from now I'm already read about this text. Write each of the following sets in the roster form. I think this is the question. Set of all factors of 24. I have already done.
There is an event possible which is too lady. You took a proper लिखा है ना, so it is not a null set. Okay.
next topic I will start from some results on subset. Bye for now. I will do the live again today. So take care. Thank you for joining me. Bye.